more than 91 years ago a child was born to an enlightened and highly literary family. He himself grew up to make a worthy contribution to society as a public intellectual. Apart from his inherited love for Urdu literature, he also loved the profession he had chosen to enter, namely, law. Justice Haziq-ul-Khairi, as he came to be known, but Khairi Sahib to me and many others, was not one of those members of the judiciary who come and go without making an impact. He was a man of principles, reminding us that a judge should not be heard in public if he is to be seen as impartial. I learnt more about him when I attended a hearing of the Federal Shariat Court when he was its Chief Justice in 2009. A petition had been filed challenging the Transplantation of Human Organs and Tissues Ordinance, 2007, as being un-Islamic. Some unscrupulous surgeons were unabashedly operating an organ bazaar and purchasing organs from impoverished villagers to graft them at a fabulous price in the rich, many of whom came from abroad. After hearing the parties and consulting Islamic law experts, Justice Khairi decided that under the law, a person is not asked to save another person's life by endangering his own. Therefore, any sale or purchase of anybody's organ would amount to violating this dictum. The judgment was widely hailed as a great one that would open the doors to ijtihad, logical interpretation of an Islamic law by consensus. Later on, it was my privilege to meet Justice Khairi and even get to know him enough to enjoy his company. Behind the grim exterior was a man with a kindly heart and a sense of humor that made him a lively conversationalist. So unassuming was he in his demeanor that many failed to recognize his greatness. In today's age of publicity, it is sad that his death earlier this month went practically unnoticed. He had his own law practice, became principal of SM Law College, a judge of the Sindh High Court, Sindh's ombudsman, member of the Council of Islamic Ideology and the Chief Justice of the Federal Shariat Court. Above all, he was a good man who didn't politicize his role as a judge for cheap popularity. He was a good man who didn't politicize his role as a judge. I saw Khairi Sahib from close quarters in his role as Speaker of the Hamdard Shura, Karachi. Hakim Saeed had personally appointed him to this position in 1994. A meeting of the Shura is held once a month in Karachi, Lahore, Islamabad, and Peshawar. He conducted the meetings with dignity and grace. He demonstrated on these occasions the immense respect for women that was his inheritance by virtue of his being the grandson of Allama Rashid-ul-Khairi, the social reformer who founded 3 magazines for women. Ismat still survives. For him education and language, especially Urdu, were of great importance. Frequently, he invited me to be the guest speaker at these sessions and he proved to be a staunch supporter of my point of view when the argument became heated. His interest in the youth was remarkable. He wrote stories and plays for children which were gripping. What was unique about him was his skill in internalizing his diverse experiences to interweave them and produce fascinating stories. Once when Bela Jamil, founder of the Children's Literature Festival, requested me to invite Khairi Sahib for a session, he readily agreed to come and speak to the children as an author. Here he narrated the story about the crows. It was interesting and ended with an account of how the crows got together to save one of their mates who was in trouble. He had much to say about the unsightly crows and their quality of flocking together in self-defense. Children learnt that looks do not matter. It is one's character that makes a difference. Another story in his book he sent me was the dilemma of identity that a man faced when another person's brain was transplanted in his head. Obviously, Syed's work in transplantation had given him ideas. Khairi Sahib would quote his father when expressing his concern for the future of the country: "We did not make Pakistan for ourselves but for the future generations so that they could live in peace, dignity and solidarity." This is quoted in his memoirs Jagte Lamhe. These are the values he stood for. An avid reader of books, American, European, Russian, and of course, our own, Khairi Sahib appreciated good literature and would say, "Good literature imbues people with high values while protecting them from rigid attitudes that drive society towards discord. Good literature drives away bigotry and prejudice so that people can breathe in an environment of freedom."
Now I know that my phone will never ring with a solemn voice saying at the other end, Aaj main nay aap kub mazmoon parha or. Today I read your column, and R.I.P. Khairi Sahib. Published in Dawn, April 21, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 91 साल पहले एक रोशन ख्याल और इंतहाई अदबी घराने में एक बच्चा पैदा हुआ था। वो खुद एक अवामी दानिश्वर की हैसियत से मुआशरे में काबिल कदर किरदार अदा करने के लिए बड़े हुए। उर्दू अदब से विरासत में मिलने वाली मोहब्बत के अलावा वो इस पेशे से भी मोहब्बत करते थे जिसमें उन्होंने दाखिल होने का इंतखाब किया था, यानी कानून। जस्टिस हज़ल-खैरी, जैसा कि उनके नाम से जाना जाता था, लेकिन खैरी साहिब मेरे और बहुत से दूसरे लोगों के लिए अदलिया के इन अरकान में से नहीं थे जो असर डाले बगैर आते जाते हैं। वो उसूलों के मालिक थे और हमें याद दिलाते थे कि अगर किसी जज को गैर जानिबदार देखा जाए तो उसे अवामी सतह पर नहीं सुना जाना चाहिए। मुझे उनके बारे में इस वक्त मजीद इल्म हुआ जब मैंने 2009 में वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस की हैसियत से समात में शिरकत की। इंसानी आज़ा और टिश्यूज़ की पैबंदकारी ऑर्डिनेंस 2007 को गैर इस्लामी करार देते हुए इसे चैलेंज करते हुए एक दरख्वास्त दायर की गई थी। कुछ बेईमान सर्जन बेखौफ तरीके से आज़ा का बाजार चला रहे थे और गरीब देहातियों से आज़ा खरीद रहे थे ताकि उन्हें अमीरों में भारी कीमत पर फरोख्त किया जा सके, जिनमें से ज़्यादातर बैरून मुल्क से आए थे। फरीकैन को सुनने और इस्लामी कानून के माहिरीन से मशावरत के बाद जस्टिस खैरी ने फैसला सुनाया कि कानून के तहत किसी शख्स को अपनी जान खतरे में डालकर किसी दूसरे शख्स की जान बचाने के लिए नहीं कहा जाता। लिहाजा किसी के आज़ा की खरीद और फरोख्त इस उसूल की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होगी। इस फैसले को बड़े पैमाने पर एक अजीम फैसला करार दिया गया था जिससे इत्तेफाक राय से इस्लामी कानून की मंतकी तशरीह के दरवाजे खिल जाएंगे। बाद में जस्टिस खैरी से मिलने और यहाँ तक कि उनकी सोहबत से लुत्फ अंदोज होने के लिए उनको जाना मेरे लिए एजाज की बात थी। इस घिनौने बैरूनी हिस्से के पीछे एक मेहरबान दिल और हिस्स मज़ा का हामिल शख्स था जिसने इसे एक जानदार गुफ्तगू करने वाला बना दिया। वो अपने तर्ज अमल में इस कदर बेबाक था कि बहुत से लोग उसकी अजमत को पहचानने में नाकाम रहे। आज की शोहरत के दौर में ये अफसोसनाक है कि इस माह के अवाइल में उनकी मौत अमली तौर पर किसी की नज़र ओहे से ओझल रही। वो एसएमला कॉलेज के प्रिंसिपल, सिंध हाई कोर्ट के जज, सिंध के मोहतसिब, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन और वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस बने। सबसे बढ़कर वो एक अच्छे आदमी थे जिन्होंने सस्ती मकबूलियत के लिए जज के तौर पर अपने किरदार को सियासी रंग नहीं दिया। वो एक अच्छे आदमी थे जिन्होंने जज की हैसियत से अपने किरदार को सियासी रंग नहीं दिया। मैंने खैरी साहिब को हमदर्द शूरा, कराची के स्पीकर की हैसियत से करीब से देखा। हकीम सईद ने उन्हें ज़ाती तौर पर 1994 में इस ओहदे पर मुकर्रर किया था। शूरा का इजलास माह में एक बार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में होता है। उन्होंने इन मुलाकातों को वकार और फजल के साथ अंजाम दिया। उन्होंने इन मौके पर ख़वातीन के लिए बेपनाह एहतराम का मुजाहिरा किया जो उनकी विरासत थी, क्योंकि वो ख़वातीन के लिए 3 रिसाले कायम करने वाले समाजी मुस्लिह अल्लामा राशिद-उल-खैरी के पोते थे। इनके नज़दीक तालीम और ज़बान ख़ास तौर पर उर्दू बहुत अहमियत की हामिल थी। अक्सर उन्होंने मुझे इन इजलासों में मेहमान मुकर्रर बनने की दावत दी और जब बहस गर्म हो गई तो वो मेरे नुक्ता नज़र के कट्टर हामी साबित हुए। नौजवानों में उनकी दिलचस्पी काबिल जिक्र थी। उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां और ड्रामे लिखे जो दिलचस्प थे। उनके बारे में मुनफरिद बात यह थी कि उन्होंने अपने मुतनव्वे तजुर्बात को एक दूसरे से जोड़ने और दिलचस्प कहानियां तख्लीक करने में महारत हासिल की। एक दफ़ा जब चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल की बानी बेला जमील ने मुझसे खैरी साहिब को एक सेशन में मदऊ करने की दरख्वास्त की तो उन्होंने बतौर मुसन्निफ आकर बच्चों से बात करने पर रजामंदी जाहिर की। यहाँ उन्होंने कौवे के बारे में कहानी सुनाई। ये दिलचस्प था और उसका इख्तिताम इस बयान के साथ हुआ कि किस तरह कौवे अपने एक साथी को बचाने के लिए इकट्ठे हुए जो मुसीबत में था। उनके पास कौवे के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था और वो अपने दिफा में इकट्ठे होने के उनके मेयार के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे।
बच्चों ने सीखा कि शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी का किरदार है जो फर्क पैदा करता है। उन्होंने मुझे अपनी किताब में एक और कहानी भेजी। वो शनाख्त की कशमकश थी जिसका सामना एक आदमी को इस वक्त करना पड़ता था जब किसी दूसरे शख्स के दिमाग को इसके सर में ट्रांसप्लांट किया जाता था। जाहिर है पैवंदकारी में SIUT के काम ने उन्हें आइडियाज दिए थे। खैरी साहब मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में अपनी तशवीश का इजहार करते हुए अपने वालिद का हवाला देते थे। हमने पाकिस्तान को अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए बनाया ताकि वो अमन, वकार और यकजहती के साथ रह सकी। ये बात उनकी याददाश्तों में नकल की गई है। ये वो अक़दार हैं जिनके लिए वो खड़े थे। अमरीकी, यूरोपी, रूसी और यकीनन हमारे अपने किताबों के शौकीन खैरी साहिब अच्छे अदब को सराहते थे और कहा करते थे, अच्छा अदब लोगों को आला अक़दार से आरास्ता करता है और उन्हें सख्त रवैयों से बचाता है जो मुआशरे को इंतशार की तरफ ले जाते हैं। अच्छा अदब तासुब और तासुब को दूर करता है ताकि लोग आज़ादी के माहौल में सांस ले सकें। अब मैं जानता हूं कि मेरा फ़ोन कभी भी संजीदा आवाज़ के साथ नहीं बजेगा और दूसरे सिरे पर कहता है, आज मैं नहीं आपका मज़मून पढ़ा और आज मैंने आपका कालम पढ़ा और RIP खैरी साहिब। अखज़ शदा बतारीख 21 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.